Welcome back, friends. So today I will cover something very important. There were some very nice IPOs which came out in the month of November. The last weekend, like Tata Technologies, like Flair Writing, Gandhar Oil, and of course IRDA. They have done phenomenally well. IRDA has gone bonkers from 35 to 100 yesterday. So people have made good money in IPOs, and then they are wondering what is coming next. So DOMS is a IPO, new IPO that's starting today, and definitely I have been asked to give a small opinion or a big opinion, as the case may be. DOMS, the price range of the IPO is 750 to 790, and it appears to be well, as far as the price earnings is concerned, it is 32.4 times. Pretty much close to what its competitors Kokuyu, Camlin, Link and Flair are fetching, but its growth rate is much better. It is one of the leading pencil and stationery manufacturers, and 75% of its products today are sold to general trade on a cash and carry basis. Now that gives it quite a competitive advantage. Okay. It results in one of the lowest working capital requirements in the industry. If you look at the DOMS, there used to be all these Nataraj pencils and all that, but DOMS has come out with some nice colorful pencils which are good for the children. Children like them, and even the pointers are well shaped, so they last much longer with graphite and polymer. I believe the Nataraj pencils used to be having only the graphite, but this has graphite and polymer, so that combination and that little curved mix, all this lasts much nicer and much longer. It has, believe it or not, it has got installed capacity of 1.5 billion pencils in a year. It has 14 manufacturing facilities at Valsad and Jammu, and a new one is coming up in Valsad shortly. Revenue has grown 75% annually between financial year 21 and 23 to 1,218 crores. So it's not a new entrant or by any stretch of imagination. It's got some good earnings also to support it. The sales had come down during the COVID time, but EBITDA has risen by 149% annually to 186 crores. This implies a margin of 15.3%, which is really on the higher side. Good. So EBITDA margin has expanded by 790 bips in the last 2 financial years. Now, as I mentioned, there was a little suppression of revenue as well as the margins in the COVID era, but all that has changed. The net profit was 102 crores in financial year 23 against a loss of 6 crores in financial year 21. And so all this is making for a pretty good, and it is entering very rapidly in the pens and markers segment. Now this is a little different segment, but the geometric instruments, pens and markers, well, it's a natural expansion. Now, there is one way of saying that, yes, these are new segments and they would need to incur more promotion, advertisements and all, but they're already there. People who are buying pencils would also be wanting to buy pens and markers and especially geometric instruments for their studies and education. So I think it's a pretty natural expansion, and I don't see any reason why they should be incurring so much more promotion. It's pretty much the same channels, right? They may be giving some freebies like buy 6 pencils, get a small sharpener in return, right? Remember our school days, how we used to get, okay? And then we used to get tempted more by that sharpener, that extra free thing, rather than by those pencils. Just like you also get tempted by all the free things I give. Yesterday was very amusing, by the way, with all these predictions. We did so well yesterday. There's somebody who wrote in the comment that I'm your uncle writing, and thank you very much. So I don't know, one of my persons working with me says, sir, I don't know how many uncles and aunts you have. They are all watching your videos, all are making money.
My real uncle and aunts are making money as well as the others. Anyway, it's good. If people think that they are a part of my family, I'm more happy than they are. And even if the real uncles and aunts are watching this video and making money, I am very, very happy. Okay. So friends, I think it looks like a good issue. 750, 790 looks to be little on the higher side, but I think the gray market premium GMP is already, I believe, around 400. And I think if you buy and or if you just get it in an IPO and just hold a share for some period of time, it should be good. It looks like a market leader in the industry and definitely worth. So DOMS, go ahead. Looks like a good issue. Friends, so be in touch. And yes, of course, for the predictions, our regular channels are there, Telegram channels. You can join any of them, Premium Plus, or the election special package. Number to get in touch is 9820861044. भाई और बहनों, DOMS की इशू अच्छी आ रही है. राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेंसिल्स वगैरह बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, बच्चों को बहुत बढ़िया लगते हैं. अलग अलग कलर के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं. तो उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. 750 से 790 का भाव है IPO का और पोटेंशियल रखता है. प्राइस अर्निंग्स तो लगभग 32.4 है, जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स हैं कोकुयू, कैमलिन, लिंक और फ्लेयर उनके लगभग करीब आ जाते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और दूसरी बात है, आपको पता है कि 1.5 बिलियन पेंसिल बनाने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी है एक साल में. और मेरे ख्याल से 15% तो उनका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में भी जा रहा है. 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वलसाड़ में और जम्मू में. मुझे भी पता नहीं था वलसाड़ में. कभी वलसाड़ जाके देखना चाहिए उनके मैन्यू. हम लोग रिसर्च करके जो आपको स्टॉक्स देते हैं, हम बात करते हैं मैनेजमेंट में, मानूंगा इसको नहीं, लेकिन ये बेसिक फंडास बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है. लेकिन वलसाड़ जाने का मन कर रहा है, एक बार जाके देखना चाहिए, इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है. 75% उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जनरल ट्रेड में कैश एंड कैरी बेसिस में जाते हैं. इसके लिए वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही कम है. और रेवेन्यू है वो 75% एनुअली बढ़ा है. फाइनेंशियल ईयर 21 और 23 के बीच में 1218 करोड़ के करीब. एबिटा मार्जिन है वो बढ़ा है 149% एनुअली. ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ते जा रहा है, तो बहुत खूबसूरत. और नेट प्रॉफिट 102 करोड़ था लास्ट, ये जो फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया 23 का. और 2 साल पहले लॉस था 6 करोड़. लेकिन ना भूलिए उस वक्त कोविड का टाइम था और उस वक्त डिमांड काफ़ी सप्रेशन था काफ़ी, और मार्जिन्स भी काफ़ी स्क्वीज थे, तो बेस थोड़ा लो था, ठीक है. तो जो हकीकत है आपको बताना ज़रूरी है. ऐसा नहीं बोले कि हाँ वो उस वक्त लॉस, अभी 2 साल में इतना प्रॉफिट हो गया, 6 करोड़ लॉस से 102 करोड़. लेकिन हर चीज़ का आप कॉन्टेक्स्ट समझिए. ऐसा ही नहीं पेपर पे हाँ पढ़ लिया कि लॉस का इतना बड़ा प्रॉफिट तो बढ़िया. लेकिन फिर भी अच्छे नए सेगमेंट्स में एंटर कर रही है. पेन्स और मार्कर के सेगमेंट में लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट और वगैरह के खर्चे होंगे प्रमोशन के, ठीक है. लेकिन वो तो ये जो ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो आजकल बच्चे भी मार्क कर रहे हैं नोट्स में, क्या क्या हाइलाइट्स हैं. आजकल किस चीज़ में नहीं आते हैं मार्कर का काम. मुझे मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी मार्क करके देते हैं सर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हम जो बड़े दिन ढूंढते हैं हफ्ते में कि यहाँ बड़ा एक्शन होगा मार्केट में, तो वो भी हम भी हाईलाइट करते हैं. आजकल डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा दवाइयाँ क्रूशल है उस पर भी मार्क करके देते हैं. ये ना लेना भूलना भाई, नहीं तो आ जाओगे वापस. और लॉयर्स हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, उसमें मोस्ट क्रूशल पॉइंट है. एक मेरा सबऑर्डिनेट है, उसको लीगल नोटिस आ गया, तो उसमें अच्छी तरह से हाईलाइट करके भेजा है कि ये मैंने बोला ये सब दिया हुआ है भाई, लेकिन फिर भी उसने मार्क करके दिया उसके हिसाब से. कोई लॉयर्स अपना भी बनाते हैं, हाँ. तो ठीक है, हमको खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए. जो मार्कर का यूज़ कितना है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. और इंस्टॉल कैपेसिटी 1.5 बिलियन और न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आ रहा है वलसाड़ में, ठीक है. तो ये पैसे जो है मेरे ख्याल से कुल मिला के 350 करोड़ और फिर 850 उनका इटालियन कोलैबोरेशन जो है वो भी
कुल मिला के ऑलमोस्ट 1200 करोड़, उस पर से 10% रिटेल के लिए, बुरा नहीं है। और जीएमपी भी अच्छा है 400। मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केट कह रहा है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, मुझे मत कोट करिएगा। तो हाई ग्रोथ है, मार्जिन्स अच्छे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सेगमेंट, इतनी यंग पॉपुलेशन है, वो यूज़ ज़्यादा करेगी। तो कहा गया था सर आईपीओस के बारे में भी बताइए। डीओएमएस मेरे तरफ से ओके, उसको लेके रख भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मिल जाता है तो गुड आईपीओ, प्लीज़ गो अहेड। नमस्ते। अच्छे हमारे मार्केट में और अच्छे शेयर्स, अच्छे प्रोडक्ट्स, मार्केट का डायरेक्शन के लिए ज़रूर हमारा ज्वाइन करिए प्रीमियम प्लस। यहाँ तो बहुत ही सिंपल डेली प्रेडिक्शंस के लिए इलेक्शन स्पेशल पैकेज अभी भी आपके लिए हाजिर है। नमस्ते, जय हिंद।